Hello, my dear kids. Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Maths of Class 5. Children, this is your book, Joyfull Mathematics, and we are doing chapter number 20. The name of the chapter is Perimeter, Area and Volume. So here let's start this chapter. Here you can see a figure is given. We have to find the area of the shaded parts. ये जो shaded part है उनका area हमें निकालना है. By counting squares, assumes each square is 1 square centimeter. So हर एक square जो है 1 square centimeter है. So how many squares are there? 4 and 2, 6. 6 centimeter square. Similarly, 3 and 2, 5 centimeter square. So similarly, I have to find the area of the rest of the squares that are given here. Now let's learn what is a perimeter. Perimeter is derived from the Greek word perimetros, based on peri means around and metron means measure. So perimeter means to measure around the figure. कोई भी figure दिया उसके चारों तरफ की boundary को हमें measure करना है. This is called perimeter. So the sum of the lengths of the sides of a closed figure is called perimeter. कोई भी अगर closed figure है उसके जो भी sum of lengths हैं sides के उनको हम plus करते हैं, we get the perimeter. How can we find the perimeter of polygons? So here the first polygon is perimeter of a triangle. A triangle is three-sided closed figure. 3 sides होते हैं, ये closed figure होता है. A perimeter of triangle ABC is sum of length of its sides. तो ये जो triangle है इसका जो length है उन सारे sides को अगर हम plus करें, for example AB plus BC plus CA, हम इन सबको प्लस करेंगे, we will get the perimeter of the triangle. Now, what is the perimeter of equilateral triangle? A triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle. वो triangle जिसके सारे sides क्या हैं? Equal होते हैं, उन्हें हम equilateral triangle कहते हैं. Now, here the perimeter is sum of all the length of sides of triangle. जितने भी length हैं triangle के उन सबके जो भी लेंथ से उनके अगर हम उनको प्लस करें we will get the perimeter. So here AB plus BC plus CA is L plus L plus L, which is equal to 3L, which means 3 multiply side. Now perimeter of rectangle. Rectangle is a 4-sided closed figure in which opposite sides are equal. So ये जो rectangle है ये 4-sided figure है जिसके जो opposite side क्या होते हैं? Equal होते हैं. For example, AB is equal to DC and AD is equal to BC. So AB and CD are length here and AD and DC are BC are breadth. Perimeter of rectangle कैसे निकालते हैं? AB plus BC plus CA plus DA, CD plus DA. So यहाँ पे 2AB and 2BC. So 2 will be the common one. So the perimeter of a rectangle is 2L plus B. Now perimeter of square. So here the square is 4-sided figure जिसके सारे sides equal होते हैं. So here the perimeter of square is sum of length of its side. ये जो है जो भी square के जो sides हैं वो उनको plus करने पे we will get the perimeter. So here PQ, QR, SR and PS. ये सारे क्या है? पेरीमीटर हैं. So 4 multiply PQ, which means 4 multiply side. So this is the perimeter of square. Next is perimeter of irregular shapes. Irregular जो shapes होते हैं जिनका कोई particular shape नहीं है, ना वो square है, ना वो triangle है, ना तो rectangle है, ऐसे shapes का perimeter कैसे निकालते हैं? So the perimeter of irregular shape is the sum of all the sides. जितने भी sides हैं सबको plus कर दो, we will get the perimeter. So here AB, then BC, CD plus DE plus EF
plus FG plus GH plus HI plus IJ plus JK plus KL plus LA. अब इन सबको हमने प्लस किया, we get 32 as the perimeter of this irregular shape. Now children, let's move on to example number 1. Here we have to find the perimeter of the equilateral triangle whose one side is 3 cm. यहाँ पे हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखेगा जिसका क्या है, एक साइड जो है 3 सेंटीमीटर, तो मींस बाकी साइड भी क्या होंगे, 3 सेंटीमीटर होंगे. सो हियर द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 मल्टीप्लाई साइड. सो 3 मल्टीप्लाई साइड क्या था, 3. सो द आंसर इज 9 सेंटीमीटर. Now example number 2 is the length and breadth of a rectangular field is 225 meter and 120 meter. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लंबाई है 225 मीटर और ब्रेड्थ है 120 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस. तो हमें किस लेंथ को हमें बतानी है वायर की, इससे हमें इसको चारों तरफ से फेंस करना. तो कितना वायर चाहिए हमें. ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 5 रुपीज पर मीटर. 5 रुपए का 1 मीटर है, तो कितने मीटर हमें वायर की जरूरत है और कितना कॉस्ट आएगा. So here we can see the length of field is 225 meter, breadth is 120 meter. Now the perimeter is 2L plus B. So here when we solve this we get 690 meter. Now अब 690 meter का तो ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया इस पूरे फील्ड का. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताया गया कि 1 मीटर अगर हम वायर खरीदते हैं तो 5 रुपए का मिलेगा. तो 690 मीटर अगर हम परचेज करेंगे तो we have to multiply this 690 by 5. So we will get 3450 as and this much rupees we have to pay for fencing. Now let's move on to exercise 20.1. Here the first question is find the perimeter of the following. So here a triangle is given in which AB is 6 centimeter, BC is 11 and CA is 9. So here how can we find out the perimeter? So the perimeter of triangle ABC is 3 multiply side. So here what we have to do, 3 we have to multiply 6 plus 11 plus 9. So children, here the perimeter of this triangle is AB plus BC plus CA. Now let's add all these. So we will get 26 centimeter is the perimeter of this triangle. So similarly children, you have to do the rest questions. Now let's move on to question number 2. Find the perimeter of the square whose side is. हमें perimeter बताना है square का जिसका side क्या है, 6 centimeter and breadth is 4 centimeter. So this is a rectangle, 6 and 4. So as we know that perimeter of rectangle is 2L plus B. Now 2 length will be 6 and breadth is 4. So here 2 multiply 10. So it will be 20 centimeter. So the answer of this is 20 centimeter is the perimeter of this square, means rectangle. Now children, let's find the perimeter of a given square whose side is. अब यहाँ पे square है जिसका side क्या है, 6. So here the perimeter of square is 4 multiply side. So 4 multiply 6. So here it is 24 centimeter. Now let's do this question number 6. Find the cost of fencing a square park. एक square park है
We have to find the cost of fencing it, and the side is 110 meter at the rate of 15 per meter. So here the perimeter of square is 4 multiplied side. So here one side is 110 meter. So the answer will be 440 meter. Now let's the question is asking 15 per meter का आपका जो है you are getting the cost of fencing. So 1 meter का है 15 rupees, तो 440 meter का हो जाएगा 15 multiply 440. So the total money that we have to give is rupees 6600. So this is the answer, rupees 6600. So this much money he has to spend for fencing the. So children, the rest questions you have to do like this only. Now let's move on to area. Look at the two shapes. Which figure is bigger and why? तो यहाँ दो shapes बने हैं. आपको क्या लगता है कौन सा figure bigger है? A or B? Yes, obviously B is bigger because it occupies more space. क्योंकि इसने जो है ज़्यादा space लिया है. We can also say that figure B has more area. हम ये भी कह सकते हैं कि जो figure B है उसका area काफी ज़्यादा है. The amount of surface enclosed by a closed figure is called its area. ये जो amount of surface जो है लिया गया है इस closed figure से उसे ही area कहते हैं. Unit of area. We measure area of a surface in square units of length. हम क्या कर सकते हैं? हम area को measure करते हैं square units में. Consider the square, each of whose sides is of length 1 centimeter. ये एक square है जिसका हर एक side 1 centimeter का है. We say that its area is 1 centimeter square or centimeter square. The standard unit of area is square unit. जो standard unit है वो है square unit. Now let's learn about the area of rectangle. Here we can see that a rectangle is given in which 5 centimeter is the length and 3 centimeter is the breadth. So here when we divide the rectangle into squares, each of the side 1 centimeter is shown. Now count the number of squares. अब जितने भी squares हम इन्हें count जब करेंगे, what we get? We can see that the rectangle has been divided into 15 squares. 15 squares हैं जिसमें इस rectangle को divide किया गया और हर square कितने का है? 1 centimeter का. So here the area of rectangle is area of 15 squares, which is 15 centimeters square, which can also be written as 5 multiply 3 and we will get 50. Now, in general, area of rectangle is length multiply breadth. So, यहाँ पे हम length और breadth को multiply करेंगे, we will get the area of the rectangle. So, area के लिए हम length और breadth को multiply करेंगे. अगर हमें length चाहिए तो हम क्या करेंगे? area upon breadth. और breadth चाहिए तो area upon length कर देंगे. Now, let's understand this more with the help of the given example. Find the area of the rectangle whose length is 15 centimeter and the breadth is 7 centimeter. So हमारे सामने एक rectangle है जिसका length क्या है 15 centimeter और breadth क्या है 7 centimeter. हमें इनका area निकालना है. So what is the formula of area? The formula of area is length multiply breadth. So 15 multiply 7 we will get 105 square centimeter or centimeter square. Both are correct. Now question number 2 says a floor of length 30 meter and breadth 25 meter has been paved with rectangular tiles. एक फ्लोर है जिसमें फ्लोर की लेंथ है 30 मीटर और ब्रेड्थ है 25 मीटर. अब इसमें क्या करने हैं? रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाने हैं जिनकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. अब कितने टाइल की जरूरत है ये हमें ढूंढना है. So first let's calculate the total area of that floor.
तो उस फ्लोर के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन जो है यहाँ पे वो ये है कि जो टाइल्स की लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी गई है, लेकिन यहाँ जो फ्लोर की लेंथ है वो मीटर में दी गई है। तो हमने क्या किया है, पहले इन दोनों की लेंथ को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो लेंथ ऑफ फ्लोर और ब्रेथ ऑफ फ्लोर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो बन गया 3000 सेंटीमीटर एंड 2500 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दिया हमने फ्लोर का और द एरिया इज 11 length multiplied by, so which will be 3 multiplied to 25 and here this is the total area of that floor. अब हमें क्या करना है, now length of the tile, अब हमें टाइल की लेंथ निकालनी है। So the length is given 10 centimeter, breadth is 5 centimeter, अब हम इसके एरिया निकालेंगे। So the area is 5 multiply 10, so here it is 50 centimeter square. So एक जो है टाइल वो है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का और जो फ्लोर है वो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर को हम वन टाइल से डिवाइड कर देंगे। सो व्हेन वी डिवाइड दिस वी गेट द नंबर्स। सो द टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड आर 1,50,000. So these many tiles are required. Now let's find the area of a square. So the square is a special rectangle with same length and width. So ये जो square होता है इसका जो length और breadth होता है वो same होता है। Consider a square of side as 3 centimeter each. हमारे पास एक square है जिसका जो side है वो 3 centimeter है। Divide the square into small squares of side 1 centimeter. अब इस square को हमने छोटे-छोटे squares में divide कर दिया 1 centimeter के। अब आप देख सकते हो total there are 9 squares. तो 9 square है इसका मतलब 9 is the area of this square. So here the formula is side multiplied side. Now let's find the area of square which has a side of 80 centimeter. So यहाँ पे length दिया है square का, we have to find the area. So the formula is side multiply side. Now 80 multiply 80 is 6400 square centimeter. Now 1 square centimeter is 10,000 square centimeter. So here 1 square centimeter is equal to 1 upon 10,000. Now the area of square will be written as 6400 upon 10,000. Now the answer will be 0.64 square meter. We have converted this into meter. Thus the area of square is 0.64 square meter. Now question number 4 is find the area of a square whose perimeter is 64. हमें एरिया ढूंढना है एक स्क्वायर का जिसका पेरीमीटर क्या है 64. So perimeter is given. So here the let's find the side of the square. तो side find करने के लिए हम क्या करेंगे, perimeter upon 4 कर देंगे. So perimeter was 64. अब हमने 4 से जब से multiply किया we get 16 meter. So here the area of the square is length multiply length. So here 16 multiply 60 which is 256 square meter. Thus the area of the square is 256 square meter. Now let's find the area of a triangle. So if it is the height of a triangle is 4 centimeter and its base is 6 centimeter. एक triangle है जिसकी height क्या है 4 centimeter है और उसका base क्या है 6 centimeter. तो हमें क्या करनी है, we have to find the area of the triangle. So area का फॉर्मूला है ट्रायंगल के बेस मल्टीप्लाई हाइट अपॉन 2. So base is 6, height is 4. इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया we get 24 and then we divide it by 2 we get 12 centimeters square. So here the area of triangle is 1 upon 2 multiply base and height. Find the area of a triangle. Let's see this. Let's learn this with an example. So यहाँ पे एक triangle है जिसका base है 8 centimeter और height is 6 centimeter. So अब यहाँ पे 8 multiply 6 is 24. Now 1 upon 2 multiply 8 multiply 6. So here the area will be 24 centimeter square. Now let's find the area of combined figures. कुछ ऐसे figures हैं जो combine होते हैं एक दूसरे में.
तो इनका एरिया कैसे निकाला जाए? कंबाइंड फिगर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल की मदद से ये फिगर्स बनाए जाते हैं। To compute the area of the combined figure, we first divide them into group of rectangle and square. हम इन्हें क्या करते हैं? पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर के ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच फिगर, और फिर हम धीरे धीरे हर एक फिगर की एरिया को कैलकुलेट करते हैं. अब क्या करते हैं? द सम ऑफ ऑल द एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर. ये जो सम है इन सब एरियाज का वो कंबाइंड फिगर के इक्वल होगा. Let's learn this with the example given here. Find the area of the following combined figure A, B, C, D, E, F. So here this is the figure. ये फिगर है हमारे सामने. अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने पहले क्या करना है? इस फिगर को डिवाइड करना है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल में. तो आप देख सकते हो जो डॉटेड लाइन है ये इस फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करी है. एक रेक्टेंगल ये है और दूसरा रेक्टेंगल ये है. नाउ फिगर लाइज L is a rectangle of length 6 cm. अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है और जो ब्रेथ है इसकी वो है 2 सेंटीमीटर की. सो ये जो है रेक्टेंगल इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर. सो अब हमने इसका क्या निकाल दिया? एरिया निकाल दिया. नाउ अब ये वाला जो है हमारा फिगर बच रहा है, अब इसका एरिया निकालना है. तो यहाँ पे आप देखो इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. सो हियर 7 मल्टीप्लाई 4 इज 24, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ हमें क्या करना है? इससे और इससे दोनों को हमें ऐड करना है. सो ऑन एडिंग वी गेट 40 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ और यू कैन से द एरिया ऑफ द गिवन figure. I hope this is clear to you children. Now let's move on to exercise 20.2. Here the first question is find the area of the given figure. Here you can see both the sides are equal, so this is a square. So here the area of the square is side multiply side. So here the area will be 2.2 multiply 2.2. Let's multiply these two numbers. So here the answer will be 4.84 centimeter square. I hope this is clear. Similarly, you have to find the area of the given figures. Now question number 2 says find the area of the rectangle. एक rectangle है, उसका area we have to find out. So here the area of rectangle is length multiply. So length multiply breadth is the area of the rectangle. So length is 9 multiply 4.5. So now let's multiply this. So here 405 centimeter square. So this is the answer children. Similarly you have to do the rest questions. Now let's move on to this question number 5. What is the area of a square park whose side is 150 मीटर. एक स्क्वायर पार्क है उसका एरिया भी आपको फाइंड आउट. सो इट्स साइड इज 150 मीटर. सो हियर द एरिया विल बी साइड मल्टीप्लाई साइड. सो 150 मल्टीप्लाई 150. सो इट्स दिस इज द आंसर 22500 मीटर square. Now find the total cost of planting grass in the at 10 per square meter. अब 10 per square meter हमें grass लगाना है. So 1 के लिए we use 10 rupees. 1 meter square के लिए हमने 10 यूज किया है. तो 22500 के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. We will get the answer 22500. So 22500 upon 10 we are going to do. हमें डिवाइड करना है. So the answer will be multiply 10 22500 multiply by 10. We get 225
000 rupees. So this much rupees he has to pay. 225,000 rupees. I hope children this is clear to you. Similarly, you have to do the rest questions that are given here. Now let's do another question here. Let's find the area of the following figure. Let's do this question number 12. Here we have to find the area of this. So first we have divided this irregular figure into rectangles. So here you can see this first rectangle A, B and C. So A, the length is 2 meter and the breadth is 1.5 meter. So the formula is length multiply breadth. So 2 multiply 1.5 will be, so it will be 3.0 meter square. Now let's find the area of B's rectangle. So here this is, length is equal to, here you can see 2 plus 1 plus 1, which is 2 plus 3 plus 1, 4 meter, and breadth is equal to 1.5 meter. Now the formula is L multiply B. So here you have to multiply 1.5 by 4. So it is 6 meter square. So here it is 3 meter square. This is 6 meter square. Now let's find the area of this rectangle. So here it is 1, 2 and 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1. So total will be 2, 3, 4, 5, 6. 6 meter is the length. Breadth is 1.5 again. So 6 length multiply breadth is equal to 6 multiply 1.5. So let's multiply this 6 by 1.5. So here it is 9 meter square. So the answer will be 9 meter square. Now let's add the area of the given numbers. So let's add these. So here it will be 18 meter square. So children, this is the answer of this question. The total area of this figure is 18 meter square. I hope this is clear. Similarly, you have to do the rest questions that are given here. Now the next question is, we have to find the volume. So what is the volume? Volume means the amount of space occupied by an object. Volume का मतलब है कितना space लिया है किसी object. When we measure length, we use one dimension. जब हम length को measure करते हैं हम एक dimension को use करते हैं. When we measure area, we use two dimensions. हम two dimensions को use करते हैं. And when we measure volume, we use three dimensions. हम three dimensions को use करते हैं. So the length, the breadth, and the height is these all things come here. Cuboids, cubes, spheres, cylinders, and cones are solid shapes. So ये जितने भी चीजें ये सारे solid shapes हैं, which occupy space and hence possess volume. ये space को occupy करते हैं और volume को possess करते हैं. Now let's learn the unit of volume. We measure volume of a solid shape in cubic units. हम solid shapes जो भी होते हैं उनके
मेजरमेंट ले सकते हैं उनके वॉल्यूम का, कैसे? क्यूबिक यूनिट्स में. सो हियर लेट्स कंसिडर अ क्यूब इज साइड 1 मीटर. हियर यू कैन सी दिस इज अ क्यूब जिसका साइड है 1 मीटर. सो आप देख सकते हो इसका जो लेंथ है 1 मीटर होगा, ब्रेथ भी 1 मीटर होगा और हाइट भी 1 मीटर होगी. We say that volume of this cube will be 1 meter cube. Standard unit of volume is cubic units. जो standard unit है volume का वो क्या है? Cubic unit. Thus, volume of a cube is 1 millimeter, which is equal to 1 millimeter cube. Now, volume of a cube of side 1 centimeter is 1 centimeter cube. And volume of a cube of side 1 meter is 1 meter cube. Now let's learn about the volume of a cuboid, जो एक rectangle का छोटा shape होता है. Let us consider a cuboid of length 5 cm. एक cuboid है जिसकी length है 5 cm, breadth है 2 cm और height है 3 cm. Let us place cubes of 1 cubic centimeter in this cuboid in our line. तो हम क्या करेंगे? 1 cubic centimeter के क्यूब्स को हम इस क्यूबॉइड में प्लेस करेंगे. So observe that we are able to place 5 multiplied 2 which is 10 cubes at the bottom layer. So नीचे का जो लेयर है उसमें हम 10 cubes को एडजस्ट कर सकते हैं. Placing layers on top of the bottom layer, we can arrange 3 such layers. और ऐसे हम 3 layers बना सकते हैं. As the height of the cube is 3 centimeter. Now, in all, 5 multiplied 2 multiplied 3, which is equal to 30 cubes or 1 cubic centimeter can be placed inside the box. So here, the volume of cuboid is length multiply breadth multiply height. So here the volume is L multiply V multiply H. Now to find the length, what we do? We use this formula volume upon breadth multiply height. Now breadth के लिए हम क्या करेंगे? Volume upon length multiply height और height के लिए हम करेंगे volume upon length multiply breadth. Now children, let's learn the volume of a cube. Cube का volume क्या होता है? So a cube is a cuboid whose length, breadth and height are equal. इसके length भी, breadth भी और height भी सब कुछ क्या होता है? Equal होता है. So the volume of a cube is length multiply length multiply length. So हम इसमें हम कह सकते हैं side cube. Side का cube होता है. 3 times इसे multiply करना. Now let us take some examples to understand the concept. इस concept को और अच्छे से समझना है. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल says find the volume of a cuboid whose dimensions are 6 cm, 4 cm and 3 cm. So cuboid है, उसके सारे dimensions दिए गए हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिए गए हैं. So length multiply breadth multiply height. So we will get 72 cm cube as the volume. Means इतना सामान उसके अंदर आ सकता है. Now find the volume of a cube of edge 6 centimeter. So volume of cube क्या है? Length multiply length multiply length. So 6 multiply 6 multiply 6 which will be 216 centimeter cube. Example 3. How many 20 centimeter cubes can be placed in a cubical box? तो 20 centimeter के कितने cubes एक cubical box में रख सकते हैं जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई है. सो पहले हम क्या करेंगे? इस क्यूबिकल बॉक्स की हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो हमने 8 मीटर को कन्वर्ट किया तो 800 सेंटीमीटर, 3 मीटर बिकम्स 300 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर बिकम्स 200 सेंटीमीटर. अब हम इन तीनों का क्या निकाल देंगे? वॉल्यूम निकाल देंगे. So the formula of volume is length multiply breadth multiply height. अब इन सबको हमने multiply किया. What we get? Nothing we have written here. Now अब चलिए देखते हैं. Length क्यूब की लेंथ क्या थी? 20 सेंटीमीटर की. अब इसका भी हमने वॉल्यूम निकाल लिया.
तो इसका वॉल्यूम था 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। अब हम इन दोनों को फॉर्मूला में प्लेस कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बॉक्स है उससे उस क्यूब के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे। बॉक्स के वॉल्यूम से क्यूब के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे। सो बॉक्स का वॉल्यूम था ये, क्यूब का वॉल्यूम था ये। अब हमने इन्हें बिना मल्टीप्लाई किए क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या आंसर मिला, 6000। सो हियर 6000 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबिकल बॉक्स। तो उस बॉक्स में हम 6000 क्यूब्स रख सकते हैं। So I hope this is clear, children. Now let's move on to exercise 20.3. Here the first question is find the volume of this. So this is a cuboid जिसकी length, breadth और height दिया है. So the volume of cuboid is length multiply breadth multiply height. So 4 multiply 1 multiply 2. So it will be 8 centimeter cube. I hope this is clear. Now let's move on to question number 2. We have to find the volume of the cubes whose edges are as follows. So यहाँ पे बहुत सारे questions है. Let's do this C part. So here we have to find the volume of this cube. So volume of cube is L multiply L multiply L. So it will be 20 multiply 20 multiply 20. So it will be 2 to the 4 and 4 to the 8 and 3 zeros. Centimeter cube. So this is the answer of this question. Now let's do this question number 3. Find the volume of the cube with the following dimensions. यहाँ पे cube है, उसके कुछ dimensions दिए गए हैं. Let's find the volume. So let's do this question number 1. So here the volume of cuboid is length multiply breadth multiply height. So length is 24 multiply breadth is 10 and height is 12. So it's 240 multiply 12. Now 24 multiply 12. So 2, 8, 8 and 1, 0. Volume of this cuboid 2880 centimeter cube. I hope this is clear. So children, now let's do this question number 7. A block of wood in the shape of a cuboid has length this much, breadth this much and height is this much. How many cubical blocks each of 50 centimeter can be cut from? तो एक वुडन ब्लॉक है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दी गई. हमें क्या करना है, इसमें से कुछ क्यूबिकल ब्लॉक्स बनाने हैं जो 50 सेंटीमीटर के होने चाहिए. तो पहले हम इसका वॉल्यूम चेक करते हैं. सो द वॉल्यूम विल बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो लेंथ इज 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 2. So let's multiply all these. So here the volume is 7.5 meter cube. So children, let's do this 7th question. Here length is this, breadth and height is given. First we have to convert this into centimeter. So for converting we have to multiply this. Length is equal to 2.5 multiply 100. So it will be 250 centimeter. Now breadth is 1.5 multiply 100. So it will be 150. Now height is equal to 2 multiplied by 100. So it will be 200 centimeter. अब हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट को कैलकुलेट करेंगे. So 250 multiply 150 multiply 200. So here the answer will be 25. So it will be 750. So this is the centimeter cube. So this is the answer.
Now we have to get this. So we will divide this number by 50. So 50 से जब हम इसे divide करेंगे, we will get. So 1,50,000 is the answer. So this is our cubic centimeter. Now what we have to do, we have to find the volume of this. तो हम क्या करेंगे, इसका volume निकालेंगे, and for that let's find the volume of this cube. So 50 centimeter is given. Volume is equal to 50 multiply 50 multiply 50. So अब हम इसमें हम इसको solve करेंगे. So children, when we divide this, we get the answer as 60. So here the answer will be 60 cubes we can cut out from this cubical log. So like this children, you have to complete the rest of the questions, and with this we have completed the chapter. I hope that you understood it, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay related.